Sir, numerical. Yeah. So let us solve another problem. Example 9.8. Can you see this? दिख रहा है ये? हाँ सर दिख रहा है. Okay, so example 9.8 is N-butane is isomerized to isobutane by the action of catalyst at moderate temperatures. It is found that equilibrium is attained at the following compositions. Okay, so temperature 317 Kelvin. Equilibrium composition of N-butane is 31% mole percent, and at 391 equilibrium composition of N-butane is 43%. So when you have N-butane isomerized to isobutane, what is the reaction? क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन क्या होगा रे? केमिस्ट्री. Or no? क्या? मुझे पता नहीं है कैसे होता है आइसोमराइजेशन, क्या होता है रिएक्शन. क्या केमिस्ट्री इतना वीक है क्या? केमिकल इंजीनियर कैसे बनोगे रे? The chemistry is so weak. क्या? Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. तो जवाब तो दो, कोई तो दे जवाब. Yes, no, otherwise I will think कि network is not there. So when you talk about isomerization, what is the reaction? So N-butane का फॉर्मूला क्या है? What is N-butane? C4H10. एक मिनट. Okay, so it is C4H10, normal C4H10, right? Isobutane का क्या होगा? C4H10 होगा. C4H10, right? That's all. C4H. So structure और कुछ. Okay, so reactant is normal butane and product is isobutane. Okay, so when you look at this reaction and this is the composition given, composition normal butane is 31% and isobutane normal butane at 317 it's 31% and at 391 it is 43%. मतलब क्या है इसका? What do you interpret from here? Reactant क्या है? What is the reactant? N-butane. And what is the product? Isobutane. Isobutane, right? So feed में क्या रहेगा? When you talk about reaction, there's a feed and N-butane. N-butane. Now product में क्या रहेगा? Isobutane.
Only isobutane? Remaining N-butane. N-butane Product unreacted. will have N-butane plus isobutane, right? So when they say 31% is N-butane, what does it mean? How much is isobutane? 100 minus 31. Right. So isobutane is nothing but ठीक है. So now you know the product composition. isobutane कितना है product में और feed में कितना है, right? So assuming that activities are equal to mole fraction, what is it? That means A is equal to X or AI is equal to XI. That's what he's saying, right? Assuming that activities are equal to mole fractions, calculate the standard free energy of the reaction at 317 and 391 Kelvin. That means you need to find delta G0, right, at these two temperatures, and the average value of heat of reaction over this temperature range. That means you can find delta H of a reaction in this range. Okay. So how will you find out delta G0? What is delta G0 equal to? डेल्टा G0 क्या होता है? इक्वेशन क्या है डेल्टा G0 का? अरे कल तो इतने प्रॉब्लम किया, कुछ याद ही नहीं रहता क्या? माइनस RTLN. फिर कितने बार करोगे सेम प्रॉब्लम टू रिमेंबर द फॉर्मूला एटलीस्ट? So in order to find delta G0, what we need is value of K. Can you find out K value? How is K defined? K कैसे define करते हैं? What is the definition of K? K का definition क्या है? Nobody knows. Yeah, the definition. K is nothing but pi of AI to the power of nu I. What does it mean? The reaction is N-butane going to isobutane. What is this pi of AI to the power of nu I? कुछ याद नहीं है. A of isobutane upon A of normal butane. Right? यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, right? So nu is nothing but A1 power of 1 to the power of 1. आवाज आ रहा है मेरा? यस, उसे हम x से रिप्लेस कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन से. X of isobutane divided by X of normal butane. Right? This is nothing but product upon reactant. Product upon reactant लिया हमने. X of isobutane of oxide new. So you know X of isobutane, you know X of normal butane. You can find out the value of K at each temperature. Once you know the value of K, you can find delta G0 at each temperature. Delta G0 दो टेम्परेचर में मिला, right? K मिला दो टेम्परेचर पर. If I have K at 317 and 391, can I not find out delta HR?
कैसे निकालेंगे कैसे डेल्टा एच आर? Went off equation. Went off equation. What is went off equation? What is went off equation? अरे कल किया था ना. dln k by dt equal to अरे delta DLN h के नहीं चाहिए, r by K1 K2 के टर्म में चाहिए. दो वैल्यू है ना K1 K2 अपने पास, तो आई वांट इन K1 K2 टर्म्स. ln k1 upon k2 ln equal minus Then h K2 naught upon by K1 rt is equal to minus the delta HR delta h 0 upon R upon r into 1 upon t1 minus 1 upon t2. 1 upon T1 minus 1 upon T2 रहेगा, 1 upon T2 minus 1 upon T1 रहेगा. नहीं t2 आपने k2 लिया है मतलब t2 रहेगा. ठीक है, तो करो ये सवाल अभी. Everything is given here. I have told you the entire solution. All you will do is plug the numbers and calculate the values. समझ में आया लोगों को? Find out the value of K at these two temperatures. From K you can find out delta G0 at each temperature, and from K you can find out delta HR0 also at in that temperature range. करो. और ये एक एग्जाम्पल बहुत बार आता है फाइनल एग्जाम में, 2-3 बार आ चुका है. Exactly as it is. To solve it, first find out the value of K at 317 Kelvin and 391 Kelvin. Then from K find out delta G0 at 317, 391 Kelvin. Then from K1 and K2 at 317, 391 find out delta HR0. Do it. And once you finish, raise your hand. ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है? किसको समझा नहीं ऐसा है कोई? ओके, समझा है तो करो. डू इट नाउ. Do it. फटाफट होना चाहिए. Shouldn't take too much time. सर आंसर 7216.96 है क्या? इसका आंसर which part? वो फाइनल वैल्यू डेल्टा एच Delta R. delta HR at what are the units? जूल. Joules में रहता है क्या delta HR? joules per mole. Joules per mole होता है, बराबर. या करेक्ट है. 721 समथिंग 7218 है बुक में आंसर. ठीक है, 7216 is also okay. Right. First find out, let me know what is the value of K1 and K2, then delta G1 and delta G2. Step by step करो. Sir, K1 2.2258. Okay. K2 1.3255. ठीक है, बुक का आंसर बता रहा है क्या मेरे को? तो नहीं सर, सॉल्व किया है सर. सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम आता है आंसर. That's very difficult to believe.
Don't read it from the book and tell me. Actually do it and tell me. It's a solved example in the book. I also know that. But unless you do it yourself, खुद कैलकुलेटर में नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. And exactly book का आंसर very rarely आता है. I am solving this solved example because many times solved examples ही exam में आते हैं. And these are all types of examples. Unsolved example आपको मैं assignment में दूंगा. वही आता है सर, K1 2.22588 ऐसा आता है K1. G0 कितना? What is delta G0 at both the temperatures? So delta G at 317 Kelvin is 2108.737 And and 391 is 9 minus 916.28. so K1 मिला, K2 मिला, delta G1 मिला, delta D मिला. Find out delta H also. Delta H not. Actually, you have to solve it. Don't read it from the book. That is not the purpose of this exercise. अब जैसे इसका हाथ जैसे इसका हो गया कैलकुलेशन, रेज योर हैंड. What is the value of delta H0? डेल्टा G0 का यूनिट्स क्या है? What is the units of delta G0? जूल पर मोल. या जूल पर मोल. एंड डेल्टा HR का वैल्यू क्या है? देवेंद्र हो गया क्या? डेल्टा सर हो गया. हो गया. हाँ सर. सबका हो गया. ठीक है. Let's move on to next problem then. अगर हो गया तो example 9.1. Estimate standard free energy change and equilibrium constant at 700 Kelvin for the reaction nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Given that standard heat of formation and standard free energy of formation of ammonia at 298 is minus 46,000 and minus 46,100 and minus 16,500 joules per mole respectively. The specific heat in joules per mole Kelvin data are given below as a function of temperature. So Cp is equal to 27.27
plus 4.93 into 10 raised to power minus 3 T for nitrogen. Cp equal 27.01 plus 3.51 into 10 raised to minus 3 T for hydrogen. And Cp equal 29.75 plus 25.11 into 10 raised to power minus 3 T for ammonia. Okay, so we need to find out standard free energy change and equilibrium constant, means K and delta G0 at 700 Kelvin. कैसे करेंगे? How will you calculate K and delta G0 at 700 Kelvin? पता है किसी को? नहीं पता किसी को? डेरिवेशन किया था पूरा हमने ये सब. We have done all the derivations. नोट्स में अगर किसी ने लिया है तो रहेगा आपके पास सब कुछ. Right, so we had done all these things to find out heat of reaction at any temperature from heat of reaction at standard conditions. Equation 2, delta HT0 is equal to delta HT1 0 plus integral T1 to T2. ठीक है, इंटीग्रल नहीं लेने का अपने को, ये इक्वेशन लेने का काम है. Equation 7, delta HT0 is equal to delta H prime plus delta alpha T plus delta beta by 2T square plus delta gamma by 3T cube. So if you know delta H at 298, you can find out the value of the constant delta H prime. And then substituting in this equation 7, you can find out delta H at any temperature. Okay. Second thing is K के लिए, ln K के लिए ये करना है. ठीक है. So first you need to find out delta H prime. Then use in this equation delta H prime, equation 10, and find out the value of A. ये नहीं मिलेगा because you don't have K, right? So we have delta G0. Delta G0 equation ये है, delta H and delta G0 at 2, you can find out the value of A. And you can find delta G0 at any temperature. And similarly, you can put the constant here in equation 10 to find out K at any temperature. ठीक है. So estimate standard free energy change and equilibrium constant. That means K निकालने के लिए equation 10 है and delta G0 निकालने के लिए equation 12 है. So we need to find out actually constants A and delta H prime. Then we can get the value of standard free energy change and equilibrium constant at 700 Kelvin. ठीक है. Cp values दिया हुआ है, heat of formation दिया है अमोनिया का. So we know heat of reaction for ammonia, and we also know standard Gibbs energy change of reaction. वो यूज़ करो and find out. स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का है पूरा. थोड़ा लंबा है बट यू नीड टू डू इट बिकॉज ये एग्जाम में आता है ऐसा एग्जाम्पल. ओके. सो फाइंड आउट फर्स्ट डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा. इसमें क्या दिया है? Cp is equal to 27.27 plus 4.93 10 to the minus, that means alpha and beta दिया है सिर्फ. So find out delta alpha and delta beta for the delta H prime. So delta H prime from equation 12 you can find A. समझ में आ रहा लोगों को? किसको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड.
ठीक है, समझ में आया तो करो. Don't tell me answers from the book. I want exact answers as per your calculations, which may not be same as in the book. Decimals change होने वाला है. ठीक है. What is delta alpha, delta beta? Find out first. Can you hear me? यस यस सर. सर वो क्वेश्चन Yes, लिखना sir. होता, डेटा देखना, क्या क्या बोल रहे? वो डेटा देखना है क्वेश्चन का. हाँ ठीक है, डेटा देखो. ओके. तो सीपी वैल्यूज दिया है, दो कांस्टेंट दिया है, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा दिया है. So find out delta alpha and delta beta for this reaction. What is the value of delta alpha? -48.8 आ रहा सर. एंड डेल्टा बीटा 34.76 into 10 to the power -3 Okay. ठीक है. So delta alpha, delta beta is okay. Now find out what is the value of heat of reaction at 298 Kelvin. What is the heat of reaction? डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा कितने लोग का हो गया? रेज योर हैंड. Only 2 people. बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? Three only. Dikshita, what is the value of alpha, delta beta? Sir, delta alpha, I got it as -48.8. Delta beta. Sir, I'm doing it. जल्दी करो, क्या है इतना टाइम लगता है? Okay, so I'll take the names. I'll know who's sleeping and who's awake. Bhushan, what is delta beta?
ब्रकोदर जादव सो रहा है। मोहसिन शेख यस सर। यस सर। सर ने अटेंडेंस नहीं, व्हाट वैल्यूज ऑफ डेल्टा अल्फा एंड डेल्टा बीटा। अभिषेक इंगड़े सर मेरा कनेक्शन ड्रॉप आउट हुआ था इसलिए मैं ज्वाइन हुआ अभी फिर से। एक्सक्यूजेस अच्छे अच्छे दे दो। अभिषेक कुमार नहीं सर। स्लीपिंग। आकाश वाघमारे सर वैल्यूज नहीं आई। क्यों नहीं आ रही वैल्यूज? क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? क्या डिफिकल्टी है? अरे आंसर है कि नहीं है? भास्कर प्रतीक, अश्विनी पोटे, चैतन्य शेलार, धैर्य पटेल, दिग्विजय सिंह चौहान सब सो रहे। गौरव पाटिल, गौरी पाटोले, ऋतुजा बोराडे, मृदुला, Yes, sir. 48.8 and 3.47 into 10 raised to minus 2. खुशी, यस सर कर रही हूँ। कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है? कौशल, कृणाल सो रहा है। कुमार धनंजय, कुणाल फराटे, महेश चौहान, फैज मोमिन, मुर्तज़ा सब सोते रहते हैं यहाँ पर। नितिन, नुपुर कर रहा सॉल्व। अरे कर रहा है, कितना टाइम लगता है? अरे माइनस करने का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या रहता है? नौटंकी नहीं करने का यहाँ पर। नुपुर स्लीपिंग। परेश, दीप पटेल स्लीपिंग। प्रणव पवार, प्रतीक्षा यस सर, आ गर्डे। गई वैल्यू। यस सर। इट्स नॉट यस सर, नो सर, आंसर हैज टू बी आंसर। यस सर आंसर आ गया। क्या है आंसर? 48.8 एंड 3.87 into 10 raised to power minus 3। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? प्रतीक्षा, प्रियंका स्लीपिंग। ऋषिकेश सो रहा है। साक्षी, सलमान सब सो रहे हैं। सार्थक पाटिल, शरायु बड़े, शिवानी। Yes, sir. अरे आंसर बताने का, यस सर नो सर नहीं बोलने का है। So शिवराज, 48.8. अरे डेल्टा एच तक पहुंच गए हम। डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा तो बहुत पीछे रह गया। शिवराज तौर, श्रद्धा दर्शाले, सिद्धि, Sir, delta H की value 71,648.45.8 है minus। डेल्टा एच 71,000 कैसे आया? सर वो अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाला। नहीं, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एच एट 298 केल्विन। वो कितना आया वो पूछ रहा हूँ मैं। हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन कितना है ये बताओ। सर वो नहीं निकाला मैंने, वो 700 का निकाला। एक मिनट सर। 700 का क्या? 700 का डायरेक्टली कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट इट डायरेक्टली? सर क्या है ना, वो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है NH3 का माइनस 46,100 हाँ जूल तो पर। हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 कितना होगा? सर N2 और H2 का 0 होगा ना, हाँ तो NH3 का माइनस वही रहेगा जो है। तो कितना आएगा? हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 कितना आएगा? माइनस 46,100। माइनस 46,100 कैसे? कल ही किया था Minus. माइनस 46,100 कैसे होगा? कल ही किया था, सेम प्रॉब्लम कल किया था हमने। कल कितना आया था? सर कल इंटू 2 करना पड़ता। हाँ? अरे कल किया था ना हमने ये। हाँ सर, वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर कल किया तो फिर आज क्यों गलत कर रहे हो आप?
इसीलिए आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप आस्किंग ईच स्टेप में क्या कर रहे हो आप, बिकॉज इफ यू गिव मी आंसर में बी रॉन्ग एंड देन आई विल नॉट नो वेयर द मिस्टेक इज. सुमित सुखदेवे, सूरज बांदल सब सो रहे हैं. तेजस कानाडे, उज्ज्वला परदेसी, उमेश बेलदार, विराज गांधी. सर या सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करना है. लाइक अल्फा डेल्टा अल्फा और बीटा आया, बट उसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा अभी. बोला ना हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 निकालो. आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग एंड यू स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट. आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉलो. क्या बोला मैंने? फाइंड आउट व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट 298. विशाल वालंज, ऋषिज यादव सब सो रहे हैं. Yes, sir. Alpha is equal to minus 48.8 and beta is equal to 3.87 into 10 आपको raised हम to. सबका दिल्ली दूर छोड़ के आ गए. Sir, हम अभी तक heat नागपुर of reaction भी निकाला है -92.2 जूल पर मोल. -92.2 कैसे रे? Yes, sir. 46 -46,100 है तो -92.2 कैसे हो गया? Sorry, sir. 92200 जूल पर मोल. हाँ, 92,200 -92,200 जूल्स पर मोल आएगा. इतना सिंपल है. इतना सिंपल करने में प्रॉब्लम आता है. 10 मिनट लगता है आपको. क्या करोगे रे तुम लोग? So once you get delta H at 298 and you get delta alpha delta beta, substitute in this equation 7, right? इसमें हमको पता है now, we know at 298 delta H कितना है, we know temperature 298, we know delta alpha delta beta, delta क्या मान 0 है. Can find out value of delta H prime. Find out delta H prime value now. Step by step करा रहा हूँ आपको. If you can't do this much, then you are in a very bad state of mind. Find out delta H prime value from equation 7, because we know delta H T0 at 298, we know temperature, we know delta alpha, delta beta. Everything is known except delta H prime. Find out what is delta H prime. You raise your hand once you finish it. Yes, Niranjan, क्या है? सर पॉजिटिव 7.94 into 10⁻⁴ आ रहा है. पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा. सर नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आएगा because delta H T0 at 298 is -92,200. प्लस नहीं है वो. So आपका delta H prime has to come negative. It has to be same sign as delta H at 298. उससे थोड़ा कम होगा. That's all. हाँ यस सर वही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. यस कितना आ रहा है? -0.9 into So 79,000 something आएगा. -79,200, 300, 400 depending on how accurately you are doing it. वो वैल्यू आएगा delta H prime का. और किसका हो गया? What is the value, Rituja? 7.9 -7.91 into 10⁻⁴. Okay. बाकी लोग भी हाथ रेस करो. I want to know what are the values you are getting before you proceed to the next step. Finish it. ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आता है exactly ऐसा ही.
So you have to follow the steps. You have to calculate all the things systematically. What is the value, Devendra? Sir, minus 79201.0135 जूल पर मोल. ओके, ठीक है. और किसका हो गया? Sir, so 298 Kelvin itself is standard state, right? Yes, it is. So then how are we using this formula? This formula is applicable at any temperature, including standard state. This formula is not restricted to any temperature range or anything. It is applicable for any temperature. This is generation which we have for heat of reaction at any temperature, including 298. समझ में आया? Yes, sir. It is specific. It's not specific to any temperature. It is a general equation, general derivation for any temperature. And we have derived it from Hess's law. So there is no question about it not being applicable at 298 or 273 or 0 Kelvin. Any temperature we can use it. और किसका हो गया? रेजर हैंड. Delta H prime value. What is the value? Shubham, what is the value? minus 7.6114 into 10 raised to 4. Vishwajit. Sir, minus 7.9202 into 10 raised to 4. Minus 4. ठीक है. और किसका हो गया? दीक्षिता हुआ क्या? Yes, sir. क्या वैल्यू है? Minus 79201.014 joule per mole. सिद्धि. सर वैल्यू गलत आ रही है. अरे क्यों? एक- डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा करेक्ट है आपका, राइट? हाँ. डेल्टा एच एट 298 कितना है आपका? माइनस 92200. हाँ, तो फिर जस्ट सिंपल की सब्स्टिट्यूशन. टेम्परेचर को 298 डालने का वो इक्वेशन में. एक इक्वेशन मिनट. 7 में डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा सब्स्टिट्यूट करने का. टी इक्वल 298 डालना है. डेल्टा एच टी जीरो इज एट माइनस 92,200. फाइंड आउट डेल्टा एच प्राइम. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है ये तो. सर हो गया. Okay, so once you get all these values, delta H prime, then you have to use equation 12, right? Delta alpha पता है हमारे को, delta beta पता है, delta H prime पता है हमारे को भी, right? We know all these things. We know this, we know this, we know this. Delta H G0 at 298 कितना है? डेटा दिया हुआ है उसका, right? What is the value of delta G0 at 298? कैलकुलेट किया कि डेल्टा G0 at 298? किलो mole. ये दिया है, राइट? डेल्टा G
heat of formation दिया है ये. So what is delta G0 at 298 heat of standard free energy change of reaction? minus 33 kilojoule per mole. Yeah, minus 33,000 लिखने हैं. किलो जूल्स में नहीं डालने का है because everything is in joules. 33 डालोगे तो गलत आंसर आएगा आपका. Because R is in joules per mole Kelvin, so everything has to be in same units. Don't mix units. It's the biggest you do. Okay, so once you get the value of delta G0, substitute in this equation and find out the value of A. Everything else is known. Temperature is 298. Delta alpha is known. Delta beta is known. Delta G0 is known. Find out the value of A, constant A. And once you finish it, raise your hand. हो गया किसी का? Raise your hand when you finish. Yes, Shivan, what is the value? So 14.1622. Okay, good. So once you get the value of A, now you can go and substitute in equation 12 and find out और क्या find करने का है? Standard free energy change at 700 Kelvin, right? So in this equation now you know everything. Delta H prime पता है, A पता है. अभी put delta alpha, delta beta and T equal to 700 Kelvin and you get delta G0 at 700 Kelvin. समझ में आया शिवानी? हाँ sir. And similarly you can use equation 10. Same constants है यहाँ पर भी. Temperature 700 Kelvin पे you can find out the value of equilibrium constant at 700 Kelvin. Equation 10 and 12 ये दोनों use करने का. Constants पता है हमारे को, then we can find the value of K and delta G0 at any temperature. Or we can find out even delta H from equation 7 at 700 Kelvin. So find out both, all three, delta H at 700 Kelvin, K at 700 Kelvin and delta G0 at 700 Kelvin. तीनों करो.
जिस निरंजन क्या है वैल्यू? सर 14.16 आ रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 10 और 12 में. Find out delta G0 at 700 Kelvin and K at 700 Kelvin, and you can use equation 7 to find out delta H at 700 Kelvin. तीनों इक्वेशन में तीनों वैल्यू निकाल सकते हो 700 Kelvin पर. ठीक है, ओके सर। करो. यस सर। यस भूषण, हो गया ये वैल्यू? तो करो अभी डेल्टा H at 700 Kelvin, K at 700 Kelvin and delta G0 at 700 Kelvin. तीनों निकालो. किसका हो गया? और raise your hand if you're done. ए का वैल्यू किस किस का हो गया है? ठीक है, सबका 14 पॉइंट समथिंग आया. इक्वल टू. हाँ सर. Okay, so if you got the value of A, find out delta G0 from equation 12 at 700 Kelvin and K at 700 Kelvin from equation. तीनों का कांस्टेंट पता है आपको. You can find out rate of reaction at any temperature by equation 7, K at any temperature by equation 10 and delta G0 at any temperature by equation 12. ये तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हो और करो at 700 Kelvin. तीनों इक्वेशन है आपके पास. You can calculate all three values. और किसका हो गया? रेज योर हैंड. एक ए वैल्यू किसका हो गया? हाउ मेनी फिनिश्ड कैलकुलेटिंग ए वैल्यू? दीक्षिता हो गया क्या? कर रहे हैं। नहीं हुआ अभी तक? सर के कैलकुलेट कर। ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया ना? यस सर। ठीक है, तो के कैलकुलेट करो, डेल्टा G0 कैलकुलेट करो. इक्वेशन मिल गया आपको 700 केल्विन पर. एंड डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करो एट 700 केल्विन. तीनों कैलकुलेट करो. दैट इज द प्रॉब्लम, solution of the problem. Okay, any questions? Anybody has any doubts? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं. Either they will ask you to develop an equation for variation of K versus temperature, that is equation 10. That means you need to find the value of delta H prime and A and write this equation, equation 10, in terms of those two constants. Or they'll ask you to find the equation for variation of delta G0 with temperature. That means equation 12 के दो constants आना चाहिए, and you should be able to write that equation 12 with constant values. Or heat of reaction at any temperature, that means equation 7
with the value of constant delta H prime. So ये तीन इक्वेशन डेवलप करने के लिए आ सकता है, या जैसे अभी है find the value of K at 700 Kelvin any temperature and delta G0 at any temperature. So question may be slightly different, but procedure is same. Okay, so we'll stop.